The southern state of Karnataka goes to polls in less than 24 hours from now. 224 seats are up for grabs this year. There's a high-octane battle that has continued on between the BJP, Congress and the JDS in the coastal state of Karnataka. All the parties have been hosting a bunch of rallies, roadshows, as well as trying to set the agenda for Karnataka. The parties have been explaining through their manifestos what do they envision for the state of Karnataka, but ultimately it all boils down to the voters. What is it that the voters want? What is it that the voters are voting for? What issues are important and what issues are not important? We take the next 1 hour to hit the ground in Karnataka in a very special telecast where several of my colleagues join us live with the voice of Karnataka. I have with me Jayaprakash joining us from Gandhinagar in Bengaluru. I also have with me my colleague Madhu Sharma from Chickpet in Bengaluru and Ananya Bedi from Maleshwar in Bengaluru. Let me begin this conversation with Jayaprakash. JP, you're standing live at Gandhinagar in Bengaluru. If you can just take our viewers through what is it that you're picking up as far as the poll pulse is concerned. Well, less than 12 hours to go now for the polls. In roughly about around 14 hours, in fact, the polling will start. In the morning from 7 a.m. to 6 p.m. is when the polling booths will open for polling. Roughly about 52,000 polling booths have been set up all across Karnataka. 5.45 lakh odd crore valid votes across the state in a population of about 6 crore. And, about 2,500 odd candidates in the fray and 188 female candidates in that. Three parties, both BJP, Congress and JDS in a triangular fight. The two national parties are fighting it out, but then the JDS cannot be ruled out. Now the stakes are really high for both the Congress and the JDS. Remember, this election is the first of big elections in the state which will set stage for the next three elections that are going to happen in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan. And from there on, the momentum will pick up for the 2024 all-important parliamentary elections. This being the case, the BJP has left nothing to chances, and none other than the Prime Minister Narendra Modi himself leading these elections. Remember, the BJP is going through a transition. You don't have the big leaders in the party anymore. Last time around 2018, there were a lot of big guns in the party, including B.S. Yediyurappa, Ishwarappa, Jagdish Shettar and the likes. But this time around, Jagdish Shettar has left the party. Ishwarappa and Yediyurappa both have been asked to retire from electoral politics. This being the case, there is a new narrative being set here. The double-engine Sarkar, led ably from the Prime Minister, he has been touring all across the length and breadth of Karnataka, 22 mega rallies that he did, and about over a dozen road shows, and the last one culminating in Bengaluru. Remember, for the BJP, the stakes are really high because Karnataka is the gateway for the Saffron Party in the southern states. It's been seeing debacle after debacle in other states, but when it comes to Karnataka, it's their favorite hunting ground. In 2019 parliamentary elections, the Saffron Party scored a massive 25 seats out of 28. Now that's about 95% strike rate. Now when you talk about the assembly elections, it emerged as the single largest party with 106 seats, but then short of 7 to get that magic number. Now what happened to get those magic numbers? All history. But this time they are seeking a referendum again. They need to retain the seat. For example, to continue their policies and programs, which has been rolled out by the union government. We have seen the pitch of the union government is to have semblance between the state and the center. This being the case for the BJP, it's an all-out big battle. For the Congress, it's a battle of survival. Now, the revival of the Congress party, according to the Congress insiders, happened from the Karnataka itself. Now, we've seen in the case of Indira Gandhi, when the revival happened through Chikmagalur, and in case of Sonia Gandhi, she contested from Bellary. From there on, the party revived. Now, the party expects the same with the revival that should be happening from the state of Karnataka. Okay. Now,
one of the most resourceful states in the country. The state with the second highest GST collection happens from the state of Karnataka, the prosperous state, and a state which has got a lot of global names on it, and also a state for empowerment. Now, this being the case, none other than Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge comes from this very state. You have DK Shivkumar and Siddaramaiah too, pulling it all out for the Congress party. Now, as far as JDS is concerned, Kumaraswamy toured the entire state. He was the first one to, in fact, go on a political rally from November itself, the first one to hit the roads. He's done the Pancharatra Yatra throughout the state, and Devika too, joining his son in the last few days of campaigning. For them too, it's a question of survival, because after a year and a half of being in a government along with Congress, the government collapsed, and from there on they've been sitting as a spectator, even as Congress and the BJP were galloping along. So the stakes are high for all the three parties, and the battle is quite wide open. Stakes are high, Jayaprakash, and ultimately, like I said, it all boils down to the people. Jayaprakash has given us an extensive summary of what really the politics in Karnataka this time around is all about. Jayaprakash, I'll come back to you. We also have with us my colleague Ananya joining us from Malleshwaram in Bengaluru. Ananya, you've heard what Jayaprakash had to say. He's explained in great detail the political battle, but ultimately whether the voter wants to vote for you or not depends on the voters themselves. So let's try to bring in some of those voices from the ground, the people's pulse, just a few hours before the polls. Have the issues that have been created by the political parties, have they resonated in any way with the voters, be it the issue of the Hanuman Chalisa, the sovereignty comment? There is so much that political parties have had a war of words over, but what is it that the voter ultimately wants? Ananya, over to you. बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर लोगों से, कई सारे लोग हैं। मैं इस वक्त एक मार्केट में मौजूद है, ज़रा इनसे समझते हैं, क्योंकि कल कर्नाटका वोट करने जा रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, चाहे बजरंग दल बैन को लेकर हो, PFI बैन को लेकर हो, द केरला स्टोरी को लेकर हो, लेकिन मेन मुद्दे क्या हैं जिनकी यहाँ के लोग जो चाहते हैं, जिस पर विकास होना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है? क्योंकि इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ धर्म लेके आके धर्म को पोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इलेक्शन जीतो भाई, हुकूमत चलाओ भाई, धर्म को क्यों आप जुदा कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम हर धर्म का आदमी का हक बनता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है हम लोगों को हर मज़हब को हक से जीने के लिए। आप क्यों उस मज़हब को फोड़ रहे हैं? मैं एक ही दरख्वास्त करता हूं, आप अपना वोट पूछिए, आप इलेक्शन जीतिए, आप लोगों का विकास क्या है वो पूछिए। मैं बोलते आप पिछले, अगर हम 3 सालों की बात करें, क्योंकि लगभग 3.5 साल बीजेपी ने सरकार चलाई, क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम्स जो खोटा 4% का रिजर्वेशन था वो भी निकाल दिया है। हिजाब के बारे में इशू करते हैं, सिर्फ अभी उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 25 वो 4% का जिसको मिलना मिल रहा है, जो 2% काट के तुम दूसरे धर्म को दिए हैं वो लोग खिलाफ हैं उसके, क्योंकि किसी का कांग्रेस कह रही है कि अगर सत्ता में आते हैं तो 4% को बढ़ाकर 6% कर दें। वो 4% दिए तो बहुत है, और 2% दिए तो किसी के मज़हब का धर्म का उनका छीन के हम लोगों को नहीं चाहिए। जो जिसके धर्म में जो खोटा है वो खोटा उनको मिल गया तो बहुत अच्छा है। आप लोग इलेक्शन जीतो, धर्म को इस बीच में ले मत आओ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बेंगलुरु 2 दिन आए थे। धर्म को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है बात क्या सिर्फ धर्म को लेकर हो रही है, मुद्दों को लेकर होनी चाहिए? नहीं मैम, वो बात करेंगे मैम। हालांकि यहाँ पर लोग जो है कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आपने सुना कि जो मेन मुद्दे हैं, आपने देखा नहीं बोलो, तो कुछ लोगों का यही कहना है। और हमने देखा कि बात जो है वो किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू किया था जब आपने देखा होगा कर्नाटका इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन अब जो बात है, जब एंड ऑफ द मोमेंट हम देख रहे हैं, तो हमने देखा जोर शोर से पिछले 2-3 दिनों से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बेंगलुरु में भी बजरंग दल की तरफ से रैली निकाली गई। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ये कह रही है
कि बजरंग दल को बजरंग बली से क्यों जोड़ा जा रहा है, लेकिन वहीं अगर आप मेन मुद्दों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सीमा विवाद को लेकर मुद्दा है, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर मुद्दा है, और साथ ही आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण जिसे बीजेपी ने हटाया वो मुद्दा है। हालांकि 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और कांग्रेस इसको लेकर बातें कर रही है कि 6% अगर सत्ता में आते हैं तो 6% कर देंगे इस आरक्षण को बढ़ाकर। और साथ ही बड़ा मुद्दे के साथ साथ डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हम उसी के साथ जाएंगे जो विकास करेगा, क्योंकि अगर कर्नाटक का विकास होगा तो जाहिर सी बात है लोगों का भी विकास होगा और उनकी भी स्थितियां जो है वो ठीक होंगी, लोगों का यही कहना है। लेकिन अब स्थितियां आप देखिए ना, जाते जाते बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी छेड़ दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इससे पहले हमने देखा उत्तराखंड में भी इस बात का जिक्र किया गया, गुजरात में भी यूसीसी का जिक्र जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आपने सुना होगा उनकी तरफ से कहा गया कि 91 बार मुझे गालियां दी गई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र किया गया। और मेन मुद्दे जिसको लेकर यहाँ की जनता चाहती है उससे कहीं ना कहीं ये पूरा कहा जा सकता है कि उन पर तो बात नहीं हुई, लेकिन बाकी चीज़ें, चाहे द केरला स्टोरी को लेकर बात हो, चाहे बजरंग बली के मुद्दे को लेकर बात हो, और फिर कांग्रेस की तरफ से जो बयान सांप को लेकर दिया गया, गालियां दी गई, इसको लेकर जो दोनों ही पार्टियों के बीच जो पूरी बहस है चुनाव को लेकर वो छिड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि वोटिंग होनी है, कुछ ही घंटे बचे हैं और कल कर्नाटका जो है वो वोट करेगा। ऐसे में चाहे जेडीएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अगर पिछले 5 चुनाव की आप बात करेंगे और जरा समझना चाहेंगे तो 5 चुनाव में हमने देखा है कि वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का बढ़ा है, लेकिन 3 बार हमने देखा है सीटें जो है वो बीजेपी की ज्यादा आई हैं। 2018 को लेकर बात करें तो किस तरह से 14 महीने लगभग कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है। लेकिन ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का क्या वाकई नुकसान होगा बीजेपी को या नहीं, क्योंकि जब भी हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एंड ऑफ द मोमेंट पे बेस्ट फिनिशर जो है वो साबित होते रहे हैं। चाहे पिछले कितने भी आप चुनाव की बात कर लीजिए, और यहाँ भी बेंगलुरु में जब 36 किलोमीटर का उनकी तरफ से रोड शो किया गया तो इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में। हालांकि ये तो 13 मई को डिसाइड होगा, लेकिन ऐसे में क्या वाकई बेंगलुरु पूरे, अगर हम कर्नाटक की बात करें और चुनाव की बात करें तो क्या फिजा जो है वो बदल दी है, और क्या बैठे बिठाए कांग्रेस ने बजरंग दल एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के फेवर में क्या दे दिया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कर्नाटक की जनता किसको कर्नाटक की सत्ता पर बिठाती है। Okay, Ananya, I will come back to you, so stay on with us, and of course we'll try to hear some more voices. I understand people are a little hesitant, but let's ask them if in one word they can describe what is it that they want to be voting for tomorrow, what is it that they look forward to, what change perhaps would they like to see where they're staying. Even that would be very useful information for our ministers. Perhaps they can take a cue from there. Let me go across to Vrishali joining us from Hubli Central. Vrishali, over to you. Let's get in the voters' pulse from Hubli. Many voters are voting for the first time tomorrow. We have with us a few voters. We'll talk to them. कल आप पहली बार वोट करने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? और क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं कि ये आपका एक जो वोट है वो कल आप जब डालोगे तो क्या बदलाव आएगा? ऑब्वियसली एक वोट से कुछ भी बदल सकता है। हम पिछले जो इलेक्शंस हुए ना उनमें भी हम देख सकते हैं एक वोट से भी कुछ चीज़ें बदले हुए हैं। कौन सा बदल चाहते हैं आप? व्हाट यू वांट टू चेंज? अभी जो हमारा इंडिया अभी ग्रोथ कर रहा ना वो वैसे ही रहने से अच्छा रहेगा। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा स्कीम्स जारी किए, आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया, इससे हमारा जो इंटरनेशनल लेवल में दूसरे देश हमारे देश को अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से देख रहे, इससे हमारे देश के ऊपर जो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करेंगे, उससे बेरोज़गारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो कम होगा और उससे आर्थिक उन लोगों का आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव होगा और इससे हमारा इंडिया में ये जो हम फेस कर रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट और ये पुअरिटी का वो थोड़ा कम होगा। तो कल पहली बार आप वोट करने जा रहे हो? हाँ, आई एम एक्साइटेड।
We have few more with us. कल आप वोट करने जा रहे हो, इलेक्शन है. क्या कुछ उम्मीद है आपको, एक आम जनता को क्या उम्मीद है, इलेक्शन से क्या बदलेगा, क्या अच्छा होगा, ऐसा लगता है, क्या होना चाहिए? I don't know anything about voting. But जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, you feel that कि there has to be some employment growth has to increase a lot in terms of inflation. सिलेंडर्स के जो दाम बढ़ गए हैं उसको लेकर क्या लगता है, कम होने चाहिए? So certainly people here, they do want a change, but yes, and I'm very happy that people, they still consider one vote can change their life. One vote can make a big change. We have one senior citizen also with us. क्या कहेंगे, ये जो चुनाव होने जा रहा है, वोट डालने जा रहे हैं सब लोग, कल आप भी डालेंगे, क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव आना चाहिए फिलहाल जो चल रहा है? आपको क्या हमको बीजेपी आए तो सब बदला करना, रेट, गैस, ये सब ये करना, कम करना. हम गरीब लोग ज़्यादा है ना, इसलिए बोल रहे हूँ मैं. तो अभी सिलेंडर का दाम परिवर्तन है आपको? नहीं, नीचे करना. तो आप चाहते हैं कि सिलेंडर के दाम कम हो जाएं, साथ ही आप चाहते हैं कि एक बेरोजगारी जो है उसका जो बढ़ता है रेट, उसको थोड़ा सा कम, बढ़ने को नहीं देना. तो रोजगारी बढ़नी चाहिए, ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए ना. हाँ, रोकना, वो रोकना है, बढ़ने को नहीं देना. So inflation shouldn't increase. This is what even the common mans are saying. So certainly this is the voice of Karnataka, the fresh new voters. They want to vote tomorrow, and they consider that one vote can change the fate, and they consider that they believe that in the past almost one decade. The image of India has changed, and they appreciate that, but at the same point of time they also want Karnataka to grow in terms of employment, because the employment rate is not up to the mark as far as the infrastructure is concerned. We still know that many infrastructure projects are standstill, so that situation has to improve a lot. This is the buzz that we are getting from the youngsters as well as the senior citizens here in Hubli. Okay, Vishali, stay on with us. Madhu also with us on the broadcast. Madhu, I can see you're standing outside the Vidhan Soda. If you can now take our viewers through what is it that you're picking up as far as the people's pulse is concerned, and let's try to bring in some more voices if we can. Just let's keep it very simple, straightforward. Let's just go to people and ask them, what is the one thing that you would like to change in Karnataka? See, well, we have heard, people's voices from different constituencies in Bangalore and in Karnataka. The first-time voters, whose percentage is very high, and number of first-time voters are up to 9.17 lakh in Karnataka, and rest 41,000 were recently recently turned 18 years on April 1st, and their number have also been added. And all these first-time voters whom we were able to talk to, they were so excited to vote for the first time, and they have in fact given a tremendous response, saying that we are not voting for the government but voting for the administration, whoever promises us to the fulfillment of the promises and doing good service to the public. Then only they will only have our vote, is what the youth have said. And in fact we've been able to get several voices. People say that they want a change in the several infrastructural things in Karnataka, and particularly in Bangalore people are so angry on the several issues like civic body issues are there. The people also complained about the poor quality of roads and traffic issues and non-management of traffic issues and sewage water canal and other irrigation issues in Bangalore as well. No drinking water is being provided here in several parts of Bangalore. That the complaint here. People have in fact appeal to the several politicians who have done door-to-door campaign to their localities. They were given assurance that all these problems will be
will be solved once they were voted to power. And also on the other side, we've seen how politically the thing got challenging between the political parties. We've seen how rigorous the BJP has campaigned and also the Congress has campaigned. Both the parties have given neck to neck, shoulder to shoulder fight to each other, and also the JDS has now is getting stronger on the other side. They say that they are not going to be a kingmaker, but then they want to be a king is what they have said. Okay. All right. So there you heard it, viewers. We have our my colleagues there standing in Karnataka trying to get us the people's pulse. We also have some more voices that came in earlier this morning. We'll give a short breather to all of our reporters to perhaps get us some more voices as we listen in to some of the other voices that have come in this morning. Listen in. I am now joined with the first-time voters here from Vishweshwaraya Central University. So we'll just take the reaction. Ma'am, how do you feel, you being the first-time voter, you get to choose the government? Yes, sir. This is my first vote, actually. I'm very much excited to say this is my first vote. It's voting, as you know, it's a democratic right for us, sir. I'm not voting by seeing the party. Like, I'm not seeing the party member. I'm voting by seeing their achievement, what they're going to do, what they may do if we vote to that party menta. So, eagerly waiting for my vote, sir, tomorrow. What are the problems according to you? What problems you want to get rectified and, developed or completed? See, I being a female, first is safety, the security. If I come out from my home, what my parents think or what I individually as a being female think is security. And then road constructions, the library and the infrastructure, what they're giving. It's all plays a major role for what I vote for the party, sir. Okay. So, ma'am, what would you like to say, ma'am? What are you voting on? On what basis are you voting? The promises by the government they are made. The promises should not be fake. That should be improved, and that should be taken very major role place, so that the government, which are going to develop and giving all the facilities to the society, that party should be chosen. They should not mention anything. कौन कौन इधर पोर है हमारा पास सराउंडिंग में, उसको थोड़ा कुछ खाने के लिए, और फिर इलेक्ट टाइम वो लोग आता घर के पास, बेसिट देता, रेशन देता, वो डेली करना. 5 सालों में विकास हुआ है, मगर जितना विकास कांग्रेस ने किया है उतना विकास किसी पार्टी ने किया होगा ऐसा मैं बोल नहीं सकता. इस बार अब क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? इस बार कांग्रेस सरकार बनना चाहिए मेरे. यानी 38 साल में जो रिकॉर्ड रहा है कर्नाटक का, कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, तो इस बार भी चेंजेस चाहिए, क्योंकि सभी टाइम बीजेपी और बजरंग दल आते हैं, पर इस बार कांग्रेस को चांस देखना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे. अभी थोड़ा इम्प्रूव करे, पर एक भी चांस कांग्रेस भी बोल रहे हैं मैं करूँगा, तो उनको चांस देके देखना चाहिए. So there you heard it. Some of the first-time voters and other issues also reported. Development, of course, is at the top of everybody's list. Okay, Madhu and Ananya with us on the broadcast. Ananya, I'll come back to you. If you can bring us some more voices, because we're just trying to understand what issues have resonated with the people of Karnataka. What will they ultimately vote for tomorrow when they hit the polling booths? बिल्कुल, मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ और ये समझने की कोशिश करती हूँ कि कल जब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या होने वाला है. कल आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं कर्नाटक के सबसे बड़े? मैडम माफ करो मैडम, कुछ तो बोलिए, एटलीस्ट वोट नहीं तो करेंगे ना कल? आप डालेंगे वोट, अब वो सब हमको बोलने टाइम तो हमारा है. तो आपको लगता है क्या विकास होना चाहिए कर्नाटक में? बेंगलुरु में क्या है? कर्नाटका में तो ऑलरेडी विकास ही मुद्दे क्या है? क्योंकि क्या जो मुद्दे हैं यहाँ के, डेवलपमेंट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या इस पर पूरे ऑल इंडिया में ऐसा चल रहा है. बिजनेस तो पूरा सबका फ्लॉप ही चल रहा है, सबका ऐसा ही है. कांग्रेस सरकार ही आएगी इस बार, यहाँ पर स्टेट में कांग्रेस ही आएगी. लेकिन 38 साल का जो रिकॉर्ड है जिसको बीजेपी तोड़ना चाहती है दोबारा रिपीट करके, आपको लग रहा है वो टूट पाएगा रिकॉर्ड? ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. आ सकती है कांग्रेस गवर्नमेंट, आ सकती है. आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे क्या है मेन? क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर विकास हुआ है अगर हम पिछले 3-3.5 सालों की बात करें? डेवलपमेंट हुआ है आपके? क्या है भाई, ऐसा कुछ भी, क्या भी डेवलपमेंट क्या भी नहीं हुआ.
आने वाली सरकारों से क्या उम्मीद है आपकी, और क्या चीज़ है आपके दिमाग में जिसको लेकर आप कल वोट करेंगे? क्या चाहते हैं आप चेंजमेंट आने वाली सरकार से? क्या बोले हमें? कुछ और आप बोलना चाहेंगे? आप तो अभी बोल ही रहे थे, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और बहुत लोग तो आउटसाइडर्स हैं, लेकिन देखिए समझना ये ज़रूरी है कि I see Ananya, I see some young girls and young women behind you as well. Let's try to get in some of the women as well. I'll come back to you, Ananya, in just a moment. Madhu also with us on the broadcast. Madhu, what else can you tell our viewers as far as the voters' pulse is concerned? Come. Madhu, can you hear me? See, well, definitely. See, people are, lot of people are excited here to vote for the first time, and not only youth people, but others, other people are also excited, be it the old people or females or whoever. But there are several communities who want to vote BJP in power, who want to vote Congress in power, who want to vote, JDS to power. But the question remains that what will happen tomorrow, and how many votes will the BJP be able to take after the Prime Minister Narendra Modi has himself presented himself as the star campaigner of the BJP, and there is we also have seen a lot of traction when it comes when it came to the political campaigning these days, because in fact the Enforcement Directorate has seized a lot of money, which was 4.5 times 4.5 times more than Madhu, the all 2018 data census. all pertinent issues that you're raising, Madhu. I will request you, Madhu, you're standing at what seems to be a place where there are a lot of people possibly around. So if you can go speak to some of those people, then that will actually be really useful for us also, since we're trying to understand what the voter ultimately wants in Karnataka. So I'm going to request Madhu to speak to some people. Let's quickly go across to Vrishali, who's found some more voters on the ground. Vrishali, over to you. We have few more voters with us, and while I was just talking with them, they said that they are quite excited for tomorrow's voting. मुझे बताइए, आप अभी बता रहे थे एक्साइटमेंट है कल के वोटिंग के लिए, लेकिन क्या डिमांड आप चाहते हैं कि ये आपका जो आप कल वोट कास्ट करने वाले हैं उसके बाद क्या बदलाव आना चाहिए आपको लगता है? फिर वो गैस सिलेंडर की बात हो, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगारी बढ़नी चाहिए, वो वाली बात हो, कैसा आपको? हम कुछ नहीं बोल सकते मैम। तो गरीब लोगों के ये है होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी है सब उनको मिलना चाहिए, पानी वगैरह, करंट का दाम बढ़ गए, सब कॉस्टली हो गया। आजकल गरीब लोग कमाने का मुश्किल हो गया, इतना काम नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है हमारे को, फिर भी करंट बिल भरना है, पानी बिल भरना, तरकारी का वेज बढ़ गए, सब बढ़ गए, क्या का भी दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गए, क्या कि हमारे गरीब लोगों को कमाना ही मुश्किल है, उतना दाम भी बढ़ गए, थोड़ा मुश्किल कम से करना चाहिए, सब सब्जी वगैरह दाम बढ़ गए तो हम महंगाई जो बढ़ रही है उसको कम होना चाहिए, सबको लगता है फर्स्ट वही कम होना चाहिए, पहला महंगाई। ये करने वाले क्या है, सुधार करने चाहिए सब लोग, ऐसा वोट डाले आगे कौन भी आंदे देश का वोट डालने के बाद भूल नहीं जाना, भलाई करने वाले रहना है, खाने वाले नहीं रहना है। इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, एजुकेशन इम्पोर्टेंट, एजुकेशन देने के लिए आप कितना बच्चे पढ़ने रहते हैं, उनको पुस्तक के लिए क्या भी है हेल्प करना चाहिए, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे के लिए क्या भी है, महंगाई हायर एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, फीस के दाम भी बढ़ रहे हैं और एडमिशन भी नहीं मिलता है, उसके लिए अलग करप्शन होता है, कैसा देखते हैं? लेकिन गरीब लोगों को वो क्या 90% ले, सर कितना भी परसेंट ले ले, उनको जरा मिलना चाहिए, फ्री कोर्स मिलना चाहिए उनको सब पढ़ने के लिए। So here you have heard people saying that there is a need that inflation has to reduce. We have few more youngsters with us. क्या कह रहे हैं कि कल tomorrow you are going for casting? Are you casting tomorrow? No, I am going trip. We are going for ride. You are going for a ride, but there is an election, and do you feel that I don't vote for anyone.
There is no need of voting anyone. There is I'm no going by improvement. right. We are going for the right. So are you disappointed that there is seems like many issues are there? Infrastructure issue is there, water issue is there, inflation Everything is there, but we can't see that all. It's not improving. Yes. You have given up now. Yes. I'm enjoying my time tomorrow. Full day is holiday and colleges are holiday and our business also is holiday, so we are going for ride and chill the Do day. you feel that this approach will also not change the situation? No, it's never. Since we are 18 plus, we are voting. But still now we did not see any improvements in our Hubli or in our Karnataka state. All the rapes, all this, all by happening by polytechnics, all by money, that dash dash. Thank you. So we have heard the few voices. They are saying that they are quite disappointed that even after casting vote, the situation has not changed. मुझे बताइए कल वोटिंग है, कितने एक्साइटेड है? आपको लगता है कि बदलाव आएगा, कुछ अच्छा होगा? इधर तो बदलाव आएगा इस बार। कर्नाटक में पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाता है इधर पे। कौन से इश्यूज है जिसको लगता है आपको एड्रेस होना चाहिए? कौन से इश्यूज बोले तो इधर पे इसका बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में। 40% कमीशन ही बहुत हो गया। ये बोल रहे हो। क्या कहेंगे कल वोटिंग के लिए जाने वाले हैं? जाने वाले मैडम। क्या लगता है कि कौन से मुद्दों को लेके कल हम बीजेपी। कौन से मुद्दों को लेके वोट करेंगे? हाँ, कौन से मुद्दों को लेके वोट करेंगे? क्या बदलाव आना चाहिए सर? आपको लगता है महंगाई कम होनी चाहिए? नहीं, हमको कम होना चाहिए। पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, रोड अच्छा चाहिए हमको सब। रोड अच्छा चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो खस्ता हाल में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वैसे ठप पड़े हुए हैं, स्टैंड स्टिल है। हाँ मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो तो वैसे ही रुके हुए हैं। आपको लगता है इसमें हो सकता है बीजेपी ढोल गाले तो हो सकता है सब हमको मेन। क्या लगता है कल आप वोट डालने जा रहे हैं, कौन से मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? क्या मैडम? Are you casting vote tomorrow? Yes, of course. On what points you are going to cast your vote? No मैडम, एक्चुअली देखिए कैसा तो बीजेपी कैसा चल रहा है आपका पता है। सिंस फ्रॉम 8 years बैक, सो लास्ट टाइम ये अच्छा काम हो रहा है। अभी कांग्रेस कुछ नहीं किया मैडम। कांग्रेस में है लेकिन किया था पहले, अभी जैसे नहीं। लेकिन अब महंगाई का विषय है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हुए हैं। आपको लगता है इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आने चाहिए सारे प्रोजेक्ट्स? श्योर मैडम, बिकॉज नव एवरी डे बाय डे व्हाट हैपन, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज कम, सो एवरी पर्सन हैज वेरी टैलेंटेड एज कंपेयर टू अदर बिफोर दैट। सो नाउ बहुत थोड़ा आगे थोड़ा महंगाई कम होनी चाहिए लगता है आपको? क्या मैडम? महंगाई नहीं मैडम, देखिए ये जो किया है टैक्स के मोदी साहब किए ना, ये सभी ठीक है मैडम। क्योंकि क्या है, ये कम से कम 6-8 साल ऐसे चलेगा, थोड़ा तकलीफ होगा आदमी को। सो 8 साल के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा मैडम। ये सिस्टम अच्छा है मैडम मेरे ख्याल से। There are few voices who are saying that the system is good, but at the same time we need to focus on the infrastructure projects as well. Okay, Vrishali, Vrishali, gather some of those people around you, hold on to them because Ananya is also waiting by patiently. She also has some more voters with her. Ananya, over to you. Yeah, some more voters we have. क्या लगता है, what is the main issue in Karnataka election? आप कल वोट कर इशू के बारे में सोचने के जितना बड़े तो हम हैं नहीं हैं, और जब तक मोदी जी है तब तक किसी राज्य को सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली बीजेपी। आपको लगता है पिछले 3.5 साल में विकास हुआ है? और क्योंकि अगर बीजेपी दोबारा से रिपीट करती है तो 38 इयर्स का रिकॉर्ड जो है कर्नाटका को लेकर वो टूट जाएगा, और इसी मिथक को तोड़ने में लगातार बीजेपी लगी। बीजेपी कोई तोड़ने से और बीजेपी को कोई तोड़ने से कुछ होने वाला तो है नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्नाटका मिथक कि 38 इयर्स में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। हाँ, कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी इज इक्वल है, तो हम ये जज नहीं करते। क्या एक चेंज आप चाहते हैं और आने वाली सरकार से क्या आप उम्मीद करते
आने वाला सरकार से उम्मीद तो मतलब बहुत कुछ करते हैं बट वो कुछ होता नहीं है। एक मुद्दा जो आप चाहते हैं जो चेंज होना चाहिए, जिस पर विकास और ज़्यादा होना चाहिए, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे क्योंकि रोड की स्थिति भी है, ट्रैफिक जैम को लेकर हो। हाँ, महंगाई ये सभी अगर चेक करेंगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा कन्वीनियंट होना चाहिए तो नॉर्मल जो जनरेशन है तो उन लोगों के लिए। बट एक्चुअली तो डे बाय डे सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर महंगाई भी इंक्रीज़ हो रही है। मेन इश्यूज़ क्या है कर्नाटका? कल आप वोट करेंगे, क्या है आपके मन में? भीड़ ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है महंगाई बढ़ रही है। आई एम इनटू MNC कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे जस्ट लाइक ट्रैफिक के लिए नहीं चाहते और मीनवाइल रोड की तरफ से एक बार बारिश हो जाए तो इट्स स्टिल लाइक नहीं जा सकते, 2-2 घंटे बेंगलुरु पे जाते। 3.5 साल में आपने कुछ चेंजमेंट देखा है कि जो समस्याएं आप आज भी फेस कर रही हैं उनमें कुछ कमी आई हो या ज़्यादा हुई हो, कुछ इस तरह? कुछ नहीं, वो सब इलेक्शन के टाइम पे रहता है, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। अभी लेकिन होगा क्योंकि हमने देखा 36 किलोमीटर का रोड शो PM मोदी ने बेंगलुरु में किया, तो लग रहा है फिजा जो है वो बदल गई है चुनाव। वो सिर्फ वो टाइम के लिए रहता है, उसके बाद रेल भी नहीं बदला और वो फूल जो है वो भी नहीं साफ किया। देखिए तो मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। कुछ और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ पर बेसिकली बेंगलोर से नहीं है लेकिन आउटर्स भी हैं और पर बात यहाँ पर ज़रूर हम कर सकते हैं। कल आप वोट करने जाएंगी? एक्सक्यूज़ मी, आप कल वोट करेंगी? क्या मेन इशू है कर्नाटका में? बेंगलोर में क्या इशू है मेन सुधा? देखिए बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप समझिए कि Ananya, we'll give you just a moment. We'll give you a moment, Ananya. We'll go back to Vrishali. She has more people. We'll give a moment to Ananya to perhaps get in some more voices. Vrishali, back to you. We have few more youngsters with us. How you look at this election? Are you casting your vote tomorrow? No, ma'am, I did not come fill the voter ID, ma'am, actually. I did not apply for any application. But do you feel that it's important to apply for the voter's ID and, otherwise, see, raising demands and, questions will not solve the purpose. Because ultimately we need to vote and if you want a change, you need to convey that. Yes, ma'am, it's our responsibility to vote, ma'am. I will try, ma'am. If there are any suggestions regarding that, means I will. Definitely, I am going to vote for him. But how you look at this scenario? What you feel that as far as this Hubli is concerned, scenario has changed in past 5 years, or what change you want? Yes, ma'am. I had seen many changes like road transportation and the infrastructure, like development of schools and facilities in these schools, like giving midday meals, ma'am, for the students, for the poor students. Even they can learn and they can continue their education. Many developments I had seen. And giving a labor card also, ma'am. For this also, this is a main benefit for the scholarship for the students. So they can take the money from the scholarship and they can continue their education. For higher education, it is going to help a lot, ma'am. Okay, so there are voices who are saying that the change has happened. कल आप वोट डालने जा रहे हैं? Yes, ma'am. Excited हैं? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। क्या लगता है कि कौन से मुद्दों को लेके वोट डालेंगे? क्या कम होना चाहिए? इन्फ्लेशन कम होना चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए मैडम, अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो मैं एजुकेशन सिस्टम और जो एजुकेशन को जो मिलना चाहिए, जो मिल रहा है और डेवलपमेंट के जो भी है ना, वो देख के मैं वोट डालूँगा। ओके मैम। लेकिन आपको लगता है कि ओवरऑल थोड़ा महंगाई कम होनी चाहिए, गैस के भी दाम बढ़ चुके हैं और यहाँ तक कि जब आप ट्रैवल करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी जो प्रोजेक्ट है वो कई जगह पे स्टैंड स्टिल है, उनको थोड़ा सा गति मिलनी चाहिए, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आनी चाहिए वो। देखिए मैडम, अगर मुझे पूछेगा तो मैं बोलूँगा, अगर सरकार एजुकेटेड आदमी के हाथ में रहेगी ना तो सब बदलेगा, दाम भी उतरेंगे, जो बदलना है, जो जिस टाइम पे बदलना है, जो एजुकेटेड रहेगा उसके हाथ से बदलेगा। अगर एजुकेशन नहीं है, मेन तो एजुकेशन है मैडम मेरे हिसाब से, तो एजुकेशन को फोकस करेंगे तो सब बदलेगा, सब बदलने के। एजुकेशन पे फोकस करते वक्त आपको लगता है कि एजुकेशन पे अच्छी स्कीम्स भी लानी चाहिए? क्या मैडम, लाने चाहिए। अभी कर्नाटक में देखिए, अभी यहाँ धारवाड़ पे, हुबली पे ही देखिए, अब हुबली को, अब धारवाड़ को बोलते हैं एजुकेशन हब। यहाँ पे तो बहुत चेंजेस लानी चाहिए, बहुत सारे और कॉलेजेस होना चाहिए। अभी IIT तो किए हैं बीजेपी वालों ने, ये तो अच्छा हुआ है, और बहुत सारे पॉइंट्स है उठा सकते हैं, बहुत सारे काम है कर सकते हैं, तो थोड़ा फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, तो और भी बहुत सारे काम है करना चाहिए। तो
आप काफ़ी एक्साइटेड है कल? बहुत एक्साइटेड है मैडम, थैंक यू। So we have one more youngster with us. Are you excited? Yeah, I am very much excited. Casting vote tomorrow. No, I am below 18. You are below 18. But do you feel that the change has happened in past few years? क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए। आपको लगता है पिछले 5 साल में कुछ बदलाव आया है? अरे बहुत बदलाव आया है। जब से मोदी का गवर्नमेंट आया तब से तो बहुत बदलाव आया है। करप्शन का तो जो मोदी सरकार ने किया उसका तो सभी को पता ही चला है, और जब तक मोदी है तब तक तो सब आराम से चलेगा। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या जब आप चलते हो अगल बगल देखते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टैंड स्टिल हैं, उनको थोड़ा हाँ, नहीं अभी तो चल रहा है ना, अपने यहाँ पे हुबली में तो चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और स्मार्ट सिटी का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे हुबली में वो तो अच्छा ही है, अभी सही चल रहा है सब। So you have heard different voices. Some are demanding, some are happy what they have got, but yet they are excited to cast vote tomorrow. We have heard the voices of youngsters who are casting for the first time. Also, there are few who was disappointed for not getting the ID card also on time. Some didn't apply, but now regretting that they should have done it before. And on NewsX also, they have said it that next time we'll definitely do all the formalities. But yes, this is the buzz over here that they want a better infrastructure in the city. We have seen the water cut problem just 1 week back over here, since the Karnataka was heading for election, and at the same time there was a big water cut for not 1 or 2 days but around 7 days. So certainly these are the factors who are directly affecting the people over here. We have few more youngsters. कल आप वोट डालने जाने वाले हैं? नहीं मैम, स्टडी कर रहे हैं इसलिए। लेकिन स्टडी कर रहे हैं तो वोट भी डालना चाहिए, क्योंकि स्टडी करेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए भी आप अप्लाई करेंगे. फिर यू वांट दैट द गवर्नमेंट शुड रिएक्ट, शुड गिव कम अप विद सम बेटर स्कीम्स फॉर योर हायर एजुकेशन. But we are still busy, ma'am. That's why we can't go. But do you feel that next time are you going to apply? Yeah. And are you going to cast your vote? Yes, yeah, ma'am. We will. As a youngster, when you are, roam around the city, what change you feel that has to be, done, which has not yet happened so far? Still, in this today's generation, girls are not in a safety. Okay. That's the only main reason about women that I want to say. Men are not still safe in this society. Okay, so women's security is the another issue that they are addressing. We have one more girl with us. Are you agree with her statement that there has to be some more improvement as far as, are you feeling secured when you travel in the night? I'm not secure. You're not secure. So certainly the women's security is the another issue which needs to focus on. We have some senior voices are also. क्या कहेंगे, कल इलेक्शन है, वोटिंग है, आप वोट डालने जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्या बदलाव आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपकी सिटी में अच्छा कुछ हो? जगदीश शेट्टर जीतेगा। आप कौन से मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? महंगाई का मुद्दा है या और कौन से मुद्दे हैं? महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है इधर है। और एक बात अभी क्या है, अगर बीजेपी आ गए तो बहुत इधर दंगा फसाद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। और 5 साल में बहुत लोग सीएम भी चेंज होते हैं, एक ही गवर्नेंस नहीं रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट आए तो। और बीजेपी में एक अच्छा लीडर भी नहीं है। अभी येडियुरप्पा जी भी वो रिटायरमेंट ले लिए। अगर येडियुरप्पा जी होते तो अलग बात होते। इस बार तो फिक्स कांग्रेस आए, सिद्धरामैया। तो इस बार भी आपको लगता है कि कर्नाटक गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस फॉर 5 years। लेकिन आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो सारे चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पर? उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं तो बोल नहीं सकते ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
So you have heard some senior voices also. They're saying that this time the situation will again change as per the track record of Karnataka. That always it's after every 5 years the new government comes and they try their best to give to society. We have some. हिंदी मुझे बताइए कि कल वोट डालने आप जाने वाले हैं? जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने तो अभी यहाँ पर बहुत सारा समय गुजारा है, क्या कुछ बदलाव पिछले कुछ सालों में आपने देखा है और आपको क्या लगता है कि ये और बदलाव इसमें आना बीजेपी चाहता है, बीजेपी आता है, कल भी आता है बीजेपी। आप कौन से मुद्दों को लेके वोट करने वाले हैं? बीजेपी। मुद्दा क्या है आपका? गुड गवर्नेंस। मुद्दा क्या नहीं। So sometimes, emotionally driven, people are here. They have their faith in one party, and so they are. Even if you ask them why you are casting your vote on what point or what mudda, they have. We'll ask few more. Vishali, I'll come back to you. Ananya also with us. Ananya still with us on the broadcast. Ananya, if you can take our viewers through some of the latest voters' voices. Yeah, not a problem. What is the main issue in Karnataka election? Issues क्या है? What is the main issues? Main issues means I didn't get you. क्या आपके पास सड़क का मुद्दा है या फिर रोजगार को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है? What is the main issue? आप कल वोट करेंगी, क्या चाहती हैं आप? क्या चेंजमेंट चाहती है आने वाली सरकार को लेकर? First of all, the community issues should be over. Community issues and unemployment also is there. अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप बैक अगर 3-3.5 सालों की बात करें तो कितना डेवलपमेंट हुआ है? आपको लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ? Speak in English so that I can understand. Development. I am talking about the development. Development in all aspects it is, like the industries or whatever it is like that. Development is required from all aspects in Bangalore. तो कहीं कहीं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो कल वोट करने के लिए जाएंगे। आप कल वोट करने के लिए जाएंगे? हाँ। क्या लग रहा है आपको? क्या मुद्दे हैं इस बार? मेन इश्यूज क्या हैं बेंगलोर में? किसको क्या उम्मीद करते हैं आप? फर्स्ट टाइम वोट? यस, फर्स्ट टाइम। कितना एक्साइटेड हैं आप वोटिंग? एक्साइटेड तो है नॉर्मली। क्या लग रहा है आपका? क्योंकि एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या उम्मीद लग रही है आने वाली सरकार से? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या बदलाव और होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट तो अभी बहुत होना चाहिए। एट प्रेजेंटली सेटिस्फाइड है जो भी है डेवलप्ड। सेटिस्फाइड। तो देखिए, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, पर फिर भी एक फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनमें एक्साइटमेंट है कि वो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए जाएंगे। और क्योंकि एक वोट जो Okay, Ananya, stay on with us. Madhu back with us on the broadcast. Madhu, hopefully there are some people around. Let's quickly listen in to the voters' pulse. You see, we've just moved to Brigade Road and there are a lot of people here we'll try to talk to. Sir, कल elections हैं तो आपको क्या लगता है? मतलब क्या? Okay, so कल इलेक्शन डे है तो आपको क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट कौन सी आएगी, क्या है? गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस। कांग्रेस काम करती है? कौन सा काम? हर काम करती है ना, अच्छा काम करती है। हम जो काम अच्छा करता है उसी को डालते हैं, और क्या है। अभी ब्रिगेड रोड में मतलब आप ही यहीं तो रहते हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है क्या इस लोकेलिटी में? नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंगलोर में जनरल प्रॉब्लम्स क्या है? वो सब हम कैसा बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकता हम। तो मतलब वाई कांग्रेस? बीजेपी भी तो है, बीजेपी काम नहीं करती? बीजेपी भी है, वो अलग अलग तरीके का है, वो नहीं, हमें कांग्रेस को डालता उतना ही है। सर आप बताइए, आप क्या मतलब काम वगैरह सब अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। Okay. So people say that there are a lot of pending works that the administration should be taking care, and people sir
Can you आप बता सकते हैं? So yeah, people are refusing to talk to because they don't want to comment as of now. Situation remains in suspense that what will be the future of Bangalore after tomorrow. And yeah, as we go down the street, we'll get you voices of the lot of people here, and we'll try to talk to people about the opinion that of the current government and what will happen. So what will be the situations? I mean, tomorrow is election day. What problems is Bangalore having now, and what needs to be changed? So would you like to comment? No, I got no clue. So yeah, people here. Let's just. Okay. Okay, all right. So of course, those were all of our colleagues there with several voters. They've managed to bring us the pulse of the people from Karnataka, and of course we will continue this exercise tomorrow when Karnataka goes to vote once again. I thank all of our colleagues for joining us and in helping us understand what really are the true issues, because we began this telecast saying that it ultimately, viewers, boils down to the voter. What is it that the voters want? What is it that they are voting for? And that in itself becomes an important exercise for then political parties to understand. They must pick up on the voters' pulse and not the other way around. A similar effort made by another colleague of mine. Let's quickly listen in to what is it that he is understood from the people. Listen in. I am now joined with the first-time voters here from Vishweshwaraya Central University. So we'll just take the reaction. Ma'am, how do you feel? You being the first-time voter, you get to choose the government. Yes, sir. This is my first vote, actually. I'm very much excited to say this is my first vote. It's voting, as you know, it's a democratic right for us, sir. I'm not voting by seeing the party. Like, I'm not seeing the party member. I'm voting by seeing their achievement, what they're going to do, what they may do if we vote to that party menta. So, eagerly waiting for my vote, sir, tomorrow. What are the problems according to you? What problems you want to get rectified and, developed or completed? See, I being a female, first is safety. The security, if I come out from my home, what my parents think or what I individually as a being female think is security. And then road constructions, the library and the infrastructure, what they're giving. It's all plays a major role for what I vote for the party, sir. Okay. So, ma'am, what would you like to say, ma'am? What are you voting on? On what basis are you voting? The promises by the government they are made. The promises should not be fake. That should be improved, and that should be taken very major role place, so that the government, which are going to develop and giving all the facilities to the society, that party should be chosen. They should not mention anything. कौन कौन इधर पोर है हमारा पास सराउंडिंग में, उसको थोड़ा कुछ खाने के लिए, और फिर इलेक्शन टाइम वो लोग आता घर के पास, बेसिट देता, रेशन देता, वो डेली करना. 5 सालों में विकास हुआ है, मगर जितना विकास कांग्रेस ने किया है उतना विकास किसी पार्टी ने किया होगा ऐसा मैं बोलने चाहिए. इस बार अब क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? इस बार कांग्रेस सरकार बनना चाहिए मेरे. यानी 38 साल में जो रिकॉर्ड रहा है कर्नाटक का, कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, तो इस बार भी चेंजेस चाहिए, क्योंकि सभी टाइम बीजेपी और बजरंग दल आते हैं, पर इस बार कांग्रेस को चांस देखना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे. अभी थोड़ा इम्प्रूव करे, पर एक भी चांस कांग्रेस भी बोल रहे हैं मैं करूँगा, तो उनको चांस देके. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.